happening. Okay, so we have just created a new file. We are saving it as a Java file, and let's make it basics. Let's call it basics.java. Okay, we get this class over here with basics.java. I normally like to have this bracket over here, and then what you can do, you can just type main. This pops up. You just press enter, and everything is written automatically. So this also, like, it's handy to do it like that. And as always, what I do is I always print print a line whenever I start, just to make sure if everything is running fine. We run this. This should run fine, but I'm just aligned together. So I just test this up so that before I start coding, everything is okay. All right. Okay. So so the problem that we are going to do is the problem is that we have data of 3 students. So the data is, we have the first name, we have the second name, we have age, and we have a percentage, like how much they scored. Okay, so we keep it simple like this. We have 3 students, and we want to store this data for those students. And then we want to like do some manipulation on this data. We don't know like what we are going to do but for the timing, we are starting from here. Okay, and now we have the main function over here. Now, so we are going to have this, and starting from the basics, we first of all we need to decide like where and what data type are we going to store the data. So the first name, it's filled of characters. So obviously the first name is going to be string. We can also make an array of characters, but to keep things simple, we are going to make it a string. Second name, we are also going to make it a string. Age, again, age is always taken in months. So we are going, sorry, in years. So we are going to keep it in years. We are not going to go for like a 15 point something. We are just going to keep it a whole number. And percentage is always is always a decimal value. So we have to keep it accordingly. And again, for percentage, we do not need a lot of precision. So we don't have to work with the double. We will just go with float. So just defining the name. So string f name. So this is a first name. So this is we have the first name. We write string l name, second name, and then we have integer age, and then we have float percent. So like perk. Let's call it perk. Okay. So we define our 3 data types over here, and the thing is like these 3 data, but these 4 data types. So we define these 4. These 4 variables, not data types, 4 variables. And the problem is that we have 3 students, okay, and we have defined just 4 variables. So these should be 4 into 3 variables, because we need to have the first name. There are like 3 first names, there are 3 last names, there are 3 ages, and there are 3 percentages. So since we are going very basic, so the way to do that is you make it f name 1, you make f name 2, and you make f name 3. So you define your first name like this. For L name, again the same thing. You write L name 1, you write L name 2, you write L name 3. And similarly for age, you will go with age 1, age 1, age 2, age 3. And finally for percentage 1, percentage 2, and percentage 3. Okay. By the way, you guys can ask questions while I'm doing this, and so because as I said before, I'm not putting in my mic, so the voice is not going to be that clear, but I think it's pretty decent. So
So you can ask question if there's something which is bothering you. So we define these three names over here, and going by the old way of getting the input, we are going to get all the input as arguments. Okay. So getting all the input as arguments, which means like if I have f name 1, I will put it equal to argument 0. So as I said before, like this is an array of string. So whatever you pass it as an argument, so that will be 0, 1, 2, 3, 4, depending on the argument. So f name is going to be argument 1. L name is going to be argument args. I forgot this test over here. Args is going to be 1. And then age, L name 1, it's L name 1. L name 1 and age 1 is equal to arguments 2. Is that okay? Or is there something wrong? And my mouse died. Oh, now it's working. Is this okay? Yes, sir. Everything is fine up till now. It's not fine. Sir, integer dot percent love. Oh, अच्छा. Eh, why did I stop over integer dot parse int? ठीक है तो हमने ये किया था now it's fine. Why is it giving me this error? सर Because सर आर्ग्स भी लिखा आर्गुमेंट जाएगा लगेगा। ARGS आर्ग्स भी लिखना हाँ पड़ेगा args ना ये कहाँ सर से गायब हो गया? Args कहाँ से गायब हो गया? Okay, and then we have perk1, which is equal to, and we will have, what will we have over here? सर float dot parse float। Float dot parse float. चलो Very good. अभी मैं पता है कुछ लोग कह रहे होंगे यार क्या कर रहे हैं, ये तो कितना आसान है पीछे आप now you're getting used to it, right? अब इसमें बोर हो रहे हो but now that you know like what is happening, but so this is like how you get the data for the first person. Okay, and similarly if you are going to get data for all the three people, you will need to copy this, and you will need to paste this once, and you will need to paste this twice, and then for here you will have to make it a 2, 2, 2, 2, and finally we have 3, 3, 3, 3. Is there anything else that we need to do? Sir, increase the order of the args or index of the args. Yes, very good. So index, so if you were paying attention, so we did not change the index of the arguments. So it's 4, 5, 6, 7, and then 8. ठीक है, जिन लोगों को ये आता है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. इफ दे आर गेटिंग बोर्ड, आई कैन नॉट हेल्प इट. लेकिन हो सकता है किसी को ना इसमें प्रॉब्लम हो रही हो, ना समझ रहा हो, कोई चीज हो जिसमें वो फंस रहे हो, तो दिस विल सॉर्ट ऑफ क्लियर दैट आउट. Okay, so it's you will be some people will get bored for 5 or 6 minutes, but I think it's worth it because because this lecture is for everyone. अच्छा, so once this is done, so अभी भी कंप्लेन इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने वैल्यूज असाइन की हैं लेकिन हमने कहीं भी इस्तेमाल नहीं की है. ठीक है, तो इसलिए ये इट्स कंप्लेनिंग. सही है. तो ये करने के बाद एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रोग्रामिंग के बारे में. प्रोग्रामिंग आपकी अप्रोच ये होती है कि जितना कम आपको मैनुअल लेबर करना पड़े ना, दैट शुड ऑलवेज बी योर अप्रोच. अब इसमें हमारा काम बिल्कुल सही चल रहा है. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस. The only thing is like amount of effort you have to do to get the data. ठीक है, तो you have to write a lot of lines of code. So the whole point is that you reduce those lines of code so that the data can be acquired more efficiently. ठीक है, ताकि आपको जो टाइम लगे वो आपका बचे. ठीक है, तो you have to think in along those lines. So that should always be your approach. Finally, just to check everything, we write system
sorry, system dot out dot print ln, and we write first name. Let's put a slash n over here, slash n, first name, and we write plus f name 1. And let's copy this, paste, paste, paste. So this will become last name. This will become age. And this will become percentage. So let's call percentage. So F name, this is L name, this is age, age 1, and this is part 1. Okay. So now I can always repeat this, write it 3 more times just to check if everything is fine. But for the time being, let's go with this. Okay, so now we'll run this. So if everything is fine, oh, shouldn't have run this way. ये तो उसमें error index order bounds exception. Obviously, index order bounds exception इसलिए आ रही है because we need to pass some data to it, which we haven't. So we come over here, we write cd slash, we go to the place where the file is, we write Java C basics. Have I saved this? Let me confirm. Let me control S. So basics.java. So it compiles, I guess, and then I write Java basics. And then we write the first name, let's call it John Rice. His age is 10 and his percentage is 23.4. Then we have go on, go on. So we have his age is 11 and percentage is 89.4. And finally, we have UG, and his or her age is 15, and the percentage is 76.2. So it is possible that because we are giving 76.2, this will not work. We should have given this in quotes, but let's try it anyway. Let's see. So we should get John Rice 1023.4 as output. So if we give this, so John Rice age and percentage, so everything is fine. Okay, so everything is coming fine. We are getting the right output as we intended. And now इसमें ये print ln हमने किया था, इसी वजह से आपको space आ रहा है बीच में, because it's giving a new line and then it's doing print ln as well. So that's why. So we can remove this. So it will be much better this way. So if we save this and we come over here, we compile it again, and then we give it data. So now the data is much more compact. Okay? So everything is going fine, which means like whatever we were doing so far, it's okay. But as I said before, the problem is that we are writing a lot of code and it's getting the job done, but it's problematic because if I want to add, suppose, not 3 students, for 30 students, so I will have to make 30 such variables for each and every student. And in order to manage those variables, it will become very problematic. So from this, you already know where I'm going with this. And that is that instead of writing individual variables like this, we just create an array. Okay? So for every value, we create a separate array. And while we work with the array, it makes our life much easier. So again, so since we are making an array, so we have string, and then instead of f name, we just make it f name. Okay, and then since we want to initialize it, we want to tell how many, what should be the length of the string. So
a string array, so we will write 3 over here. Okay, sorry, and new string and 3. So this is the syntax for defining an array. And now it's going to be 3, 3, 3, 3. And then later the 3 can become 4 and 5 and 6. So it will be better that we just define int num students. And let's just call it num. And let's call it equal to 3. And now we, instead of writing 3 over here, we just write num. Right? So like if we have 4 students, we can just change this num to 4. 2 students, we just change this num to 2, and everything will change accordingly. ठीक है, तो इस तरह आप देखा हम अपना जो काम है अपना आसान करते जा रहे हैं. We first of all we define an array. We will do the same thing for all the other data, and over here we define num, which actually defines like how many students are over there. So now we define L name, which is equal new string and num. So we get this done. And then we have int again age, which is equal to new int again num semicolon. And finally in float percentage. Okay, we can write it like this, but just to maintain consistency, we write it like this is equal to a new float and it's num. Okay, so so now this has become much more manageable. So like instead of so over here instead of f name we will need to do f name 0, and for L name we need to do L name 0, and age 0, and perk ठीक है. अब इसकी वजह से अब क्या करना पड़ेगा कि अगर आप ये कर रहे हैं तो obviously we will have to make it 1, we will have to make it 2. Okay, those people who are just pulling their hair like why I'm not using loops, so hold on, we will be going to that, but for the time being I just want, sorry, not 2, for 1. Yeah. I will be going to the loops very soon, and I have to like lay down the basics about loops as well, so that if somebody is having problems like where to use loops or not to use loops, so so they get that cleared. Okay, so आपको ये करना पड़ेगा. And similarly for here, instead of f name 1, we need to have f name 0, L name 1, L name 0, age 1, age 0, and percentage 1, so percentage 0. ठीक है. So now we will get the first the data of the first student. Over here we are getting the data of the first student. Over here we are printing the data of first student, and then the second student, and then the third student. Right. Now so the whole point, as we said, was we have to reduce the amount of code that we write. And again, you can see like the amount of we haven't reduced that. Okay, we haven't reduced the amount of code. In fact, the amount of lines you have to write are a bit more. Okay, तो अब ऐसे में करना क्या है, करना यह है कि आपने इसे पैटर्न्स देखने हैं. ठीक है, पैटर्न्स क्या है, पैटर्न ये है कि ओके over here we have all zeros, but over here we have 0, 1, 2, 3. So there is the first pattern is that we're getting all zeros over here, then those become all ones and those become all twos. But over here 0, 1, 2, 3, and then 4, 5, 6, 7, and then 8, 9, 10, 11. ठीक है, तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो ये है कि it's slowly incrementing. अब इसको देख के ना आपको अंदाजा हो जाता है कि okay, we need to have 2 variables. The first variable always increases once all the data has been acquired for the first student, and only then this variable increases. ठीक है, और इस केस में क्या है कि डेटा जो है हर वक्त आपको इंक्रीज करता है sequentially. तो अब हम इसको अब हम कैसे सोचेंगे, हम कहेंगे okay, let's define int I and equal to 0, and इसको कहते हैं int j is equal to 0. ठीक है,
हम कहते हैं कि I is going to replace this 0, which means like I will stay the same and will increment here. Then I will stay the same again, increment here. I will stay the same again, increment at the end. So going by that, we have to do something like I plus plus here. Yeah, I plus plus is equal to I is equal to I plus 1. ठीक है, ये 1 plus 1 कर दिया I plus 1. ठीक है, या I plus equal to 1 या simply आप I plus plus लिख सकते हैं. ठीक है, I plus plus इधर करेंगे, we will do I plus plus here and we will do I plus plus here. This thing is not necessary, but I'm just doing this just to maintain the pattern. ठीक है, ओके. अब ये तो हो गया I, क्योंकि यहाँ पे हम 0 की जगह हम I को इस्तेमाल करेंगे, तो this will work. So we can remove this 0 with I. ठीक है, ये हमने कर दिया. तो now it says I is 0, it will stay 0 over here, so it means basically means the same thing. Then we have I plus 1, I becomes 1, so we need 1 over here, so again we can remove all of these values with I. नहीं, nested loop नहीं लगेगा. And then again I plus plus, then I will become 2, so again we can remove everything here with I. Alright, ठीक है. तो अब हमने क्या किया कि हमारे पास जो 0 0 0 था उसकी जगह हमने I डाल दिया. ठीक है, and then we increment I plus plus. फिर इधर क्या है कि okay, so in the beginning there should be J, and as we go to this line J has increased. ठीक है, तो one way of doing this is like we do this, we write J plus plus, so J is increasing, then we use J again, then we do J plus plus again, then we do the third thing again, we put J over here, we do J plus plus here. ठीक है, तो फिर हमें हर लाइन में J plus plus करना पड़ेगा. और what we can do is instead of doing this like this, we just write J plus plus here. ठीक है, J plus plus, J plus plus and J plus plus. ठीक है, तो किसी anybody who does not understand what's happening here? I'll take a break. Take a sip of water. So nobody is complaining, so I guess everything is fine. So we do J plus plus over here, and similarly, थोड़ी देर के लिए I missed a heartbeat. Somebody said no sir, तो मैंने कहा वो समझ में नहीं आया. फिर लिखा it's clear, so we are saved. So J plus plus, and then J plus plus again, J plus plus. ठीक है, ये हमने कर लिया. And finally J plus plus, J plus plus. ठीक है, हम सिंपली क्या करें, हम जो हार्ड कोडिंग है उससे बाहर निकल रहे हैं. ठीक है, इस हार्ड कोडिंग में बाहर निकलने का फायदा ये है कि अब अगर मुझे थर्ड स्टूडेंट का मुझे कोड लेना है, ठीक है, all I have to do is I'll just copy the fourth student. I'll just come here, I'll copy this, and I'll just paste this. So we will have data for the fourth student. It's that simple. ठीक है, तो क्योंकि मैंने हार्ड कोडिंग निकाल दी है, तो एल्गोरिदम इज, देखिए तभी तो एल्गोरिदम बनाना जरूरी है. एल्गोरिदम is working fine, and if we just change num from the top, this will start to work. ठीक है, तो अब देखें कि थोड़ा सा हमने पैटर्न्स को देखने के बाद हमने थोड़ा सा वेरिएबल को रिप्लेस किया, तो वी हैव मच मोर मैनेजेबल कोड. ठीक है, तो इसलिए ये इसका फायदा है. अब करना क्या है, करना ये है कि ओके, सो वी हैव रेपिटेशन, सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू रिड्यूस दिस रेपिटेशन. ठीक है, कि ये रेपिटेशन जो है आपकी रिड्यूस हो जाए, और ये कोड, क्योंकि हम ये बाबत
code लिख रहे हैं, same code we are writing it again and again, and we know that loops can solve this problem. Like we don't have to write the same code over and over again because loops do that for us. ठीक, तो इस वजह से हमें यहाँ पे कुछ करने की, हमें क्या करने की जरूरत है कि जो जो आइडेंटिकल कोड है हम उसको तो पहले गायब कर दें, ठीक है। तो सॉरी मेरा माउस जैसे ही काम नहीं कर रहा, सो इट्स आई हैव टू गो विद द कीबोर्ड। तो आइडेंटिकल कोड जो हमने इसको हाँ रिमूव कर दिया बिकॉज वी डोंट नीड दैट, ठीक है। हमें जो कोड चाहिए वो हमें ये वाला कोड चाहिए, ठीक। अब इसमें ये है कि यू नीड ऑलवेज नीड अ कंट्रोल वेरिएबल व्हिच कंट्रोल्स द लूप, राइट। इन दिस केस दिस इज आई, ठीक। So I can write for I is equal to 0, I is less than num. हमने num इसलिए किया because we are not going to exceed the number of students. So if you just make the changes at the top, so that is those changes are going to reflect over here as well. And we write I plus plus over here. जब हमने I plus plus इधर कर दिया, we don't need to do this, ठीक है। ये for loop यूज इसलिए करते हैं ताकि हमें ये यहाँ पे लिखना ना पड़े। We remove this, we put this in brackets. And just to keep things managed, so we put it like this, ठीक है। अब आपका I 0 से स्टार्ट किया, यहाँ पे I is equal to 0 कर दिया, और ये इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। We remove this, we just make it int I, ठीक है। अब देखें it has become very उन तीनों लाइनों को हटा के हमने ये कोड लिख दिया। It has become very well organized now, ठीक। So clutter था, गायब हो गया। हमारा algorithm था, we know that algorithm is fine. We just surrounded our code with the algorithm with the loop, which will going to run 3 times, and everything will work fine. अब इसको सिर्फ एक दफा चेक कर लेते हैं। तो पहली दफा जब लूप चलेगा, I 0 है, J 0 है, so f name 0, arguments 0, ठीक है। तो जब ये लाइन खत्म होगी तो I को कुछ नहीं होगा, लेकिन J प्लस प्लस हो रहा है तो J जो है वो 1 हो जाएगा। तो फिर L name 0 is going to get argument 1, age 0 is going to get argument 2, percentage 0 get argument 3. This is the array initialization. Okay. अब आपके पास ये आ गया, ठीक है। तो we will get all the data by this. So the algorithm is fine. This loop will work fine because once this iteration is done, I will become 1 and J will stay the same. तो J यहाँ पे आपका J3 हो गया था, तो जैसे ये लूप खत्म होगा तो J4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका J4 इस्तेमाल होगा, ठीक। and I will become 1. So 1 का J4, 2 का J5, 3 का J6, और सही 1 का यहाँ पे 1 का J4, J5, J6, J7, और फिर आई आपको फिर से आगे चल पड़ेगा। So everything looks good, and we can follow the same pattern. Since we have all zeros over here, we can just replace these zeros with I. देखिए जो आपकी ऑनलाइन टीचिंग है, नॉर्मली अगर आप वीडियो से सीखें तो उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इट्स मोर यू गेट टू क्वेश्चन, यू गेट टू सी थिंग्स लाइव, you get to do some problem solving and you can ask your questions live. तो वो तो है कि obviously कि वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन hardly there are videos which take you along with this. So तो लेक्चर्स में आने का थोड़ा बहुत फायदा होता है, ठीक है। कुछ वैसे फिर से ऐसे डिसएग्री करेंगे, लेकिन I think that lectures are important, so try not to miss them. Again, we use this like this, and again, now we are going to print all the data of all the students. Now over here, I will just add one more line so that the data between the students, there's some space between the data of the students. Okay, so there's some space. So इसलिए मैंने slash यहाँ पे डाल दिया। Okay, so now if everything is fine, I just save this
and I come over here, I compile it again, and then I give it the data. And you can see, lo and behold, everything is going. कोई एक मिस हो गया, एक एक का नाम मिस हुआ कि नहीं हुआ, UGO जनरलाइज नहीं हुआ, सबका सबका नाम है, तो ठीक है. So we get all the data very well organized and we can see like over what has worked. अब देखें, अब आपका जो डेटा था, ठीक है, उसमें हमने पूरा एल्गोरिदम बनाया. हमने पहले हार्ड कोडिंग करके बनाया. हार्ड कोडिंग करने के बाद हमने जो उसके अंदर वैल्यूज थी उनको हमने वो कर दिया, वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग हार्ड कोडिंग वी हैव अ प्रॉपर एल्गोरिदम. हमने उसके पैटर्न को अंदर समझा कि पैटर्न किस तरह का है, उसका पैटर्न को करके हमने जो उसके अंदर जो कॉमन कोड था वो हमने उठा के एक लूप के अंदर डाल दिया ताकि इट विल वर्क इजीली. ना अब इस कोड का फायदा ये है कि नाउ इफ यू हैव 30 students, you can just write 30 over here, and this code will work for all those 30 students. You have 300 students, you just write another zero over here. This code will work for all the 300 students. ठीक है, आपका एम जो होता है ये होता है कि आपने कोड ऐसा लिखना है कि once the basic understanding is done, that code should be working on all type of data. It should be easier. तो अब मुझे फर्स्ट कहें कि मुझे एक attribute और डालना है. Suppose I have to give an address. So all I have to do is I just come over here, I just copy this, and if I want to add address, I can just write this and write address, and we are good. ठीक है, तो obviously हमें ये address इधर भी डालना पड़ेगा, लेकिन amount of lines that we have to write are very very small, and it will have an impact for all the values that we are getting. ठीक है, तो ये इस तरह आपका ये डेटा आ जाएगा. So अब हम just to अच्छा, अब हम ये करने के बाद हमने एरेज को देख लिया कि एरेज कैसे काम करते हैं और आउटपुट कैसे लेते हैं, और अभी हमने इससे मेन फंक्शन में काम कर रहे हैं. अब let's jump towards a function. ओके, तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या करेगा. हमारा फंक्शन, let's say like we want to see के how did you put वैल्यूज. वो बहुत सिंपल है, कैसे वैल्यूज डालनी टर्मिनल में वो तो आप यहाँ पे टर्मिनल में लिखा. मैं जावा के जो फोल्डर था जिस वहाँ पे मेरी फाइल पड़ी थी वहाँ पे मैं चला गया. आई जस्ट राइट कंपाइल इट जावा सी बेसिक्स डॉट जावा. ये करने के बाद आई जस्ट रोट दिस अदर लाइन, दिस लाइन. ये जावा बेसिक्स जिस तरह आप उसमें करते थे, कमांड लाइन में करते थे, उसी तरह आप यहाँ पे टर्मिनल में लिख देते. वही चीज, तो इट वर्क्स जस्ट फाइन. I can always open the command prompt and do it over there. So this helps me avoid going there. I can just do it over here. ठीक है, तो ये डेटा हमारे पास यहाँ पे आ गया. So now we move towards okay. So now we look into we just create a function, and what that function is going to do is going to check if some student is young or some student is old. Okay, so let's do that. And we say that if the age of the student is less than 12 years, is 12 years or less, so we will say that the student is old. Otherwise, we will say that the student is young. So that is what we're going to do. Okay, so now in order to do that, first of all, हाँ चले हम इस पे आ जाते हैं, इस तरह करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, मेन में कर लेते हैं. So over here we get all the data of the student, and we have to check if our student is young or if the student is old. Okay, तो हम for loop में आते हैं. हम कहते हैं कि if age I is less than 12, system
dot out dot print ln young less than equal to था, ठीक है, and otherwise else we write system dot out dot println ठीक है। तो हमने डाला कि जब हम इनपुट ले रहे हैं we don't really necessarily need to do that, we can just take this out from here. So we put it where we are giving the output. So this is where we're giving the output. So uh, we check if age is less than equal to 12, it says young, otherwise it says old. Okay. And then we need to remove this from here. We can just take this line and we just put it over here. So it will just give us a space at the end. All right. हम ये करते हैं, ये करने के बाद we save this, we compile this again, and we give the input. क्या गड़बड़ index 12 auto bounds for length क्या गड़बड़ दी यहाँ पे आ गया 23. Anyway, notice whatever I did wrong. में क्या गड़बड़ा है, कोई मैंने यहाँ पे डाल दिया, ओके ये 300 कर दिया था, मे बी दिस इज व्हाई, होना तो नहीं चाहिए था उससे, हाँ शायद होना चाहिए था, ठीक है 300 वैल्यूज दे दी ना इसलिए नहीं हुआ। ओके सो वी सेव दिस, वी compile it again and we give it data again, so now it's working. So it says यहाँ पे इसने young क्यों नहीं कहा, ओके ओके ओल्ड यंग बहुत ऊपर चले गए थे, एंड एंड यंग 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 ओल्ड, ठीक है, तो ये इसमें यंग यंग ओल्ड कह दिया उसने, तो इफ एल्स हमारा यहाँ पे सही काम कर रहा है, ठीक। तो जो अब देखिए ये एक सेपरेट फंक्शन है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक सेपरेटली काम कर रही है, इसका इससे इतना ताल्लुक नहीं है। तो आप फंक्शन एक और तब क्रिएट करते हैं कि जब आपके पास ऐसा डेटा हो कि जिसके ऊपर ना आप सेपरेटली कुछ काम करना चाह रहे हो, तो ऐसे में आप क्या करते हैं कि उसको एक अलग फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो फिर वो फंक्शन जो है हमारे लिए सारा काम करते हैं, बिकॉज दीज डिटेल्स गो इनटू दैट फंक्शन। तो हम क्या करते हैं कि हम मेन के ऊपर फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं, वी डिफाइन इट द सेम वे, पब्लिक static, and it's not going to return anything void, and let's call it young old, ठीक है। और यंग ओल्ड जो है उसके अंदर ये जो कोड हमने लिखा हुआ है, ठीक, हम इस कोड को उठा के इसको हमने यंग ओल्ड के अंदर डाल दिया, ठीक। और यहाँ से और यहाँ पे हमने यंग ओल्ड कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो जहाँ अब यंग ओल्ड यहाँ पे कॉल हो जाएगा, ये यंग ओल्ड हमें बताएगा कि ये जो ये क्या हो गया, इसको हटा सकते हैं, इसको बंद करते हैं, जूम नहीं, सी क्लीनर, जिसको स्टीम बंद कर दें, इसको हटा गया, इसको, ठीक है। अच्छा यंग ओल्ड आप इसको कॉल कर लेंगे और यंग ओल्ड जो है हमें ये आउटपुट दे देगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यंग ओल्ड इज यूजिंग एन एरे एंड वी हैवंट डिफाइंड एनी एरे ओवर, तो young old does not see this age array,
ठीक है, तो इसका मतलब है कि दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। ठीक, हम करना क्या चाहते हैं कि जो भी हम इसको डेटा दें, तो बेस्ड ऑन दैट डेटा द यंग ओल्ड शुड टेल अस इफ द स्टूडेंट इज यंग और ओल्ड। ठीक है, अब जो डेटा हम देंगे तो दैट इज एक्चुअली एन एज। ठीक है, वी डोंट नेसेसरी नीड टू गेट द एरे, वी जस्ट नीड टू गेट द एज। तो ऐसे में हम ये कर देंगे इंट, हमको लेट्स कॉल इट उमर कर देते हैं, उमर। ठीक, और यहाँ पे हम एज की जगह हम उमर कर देंगे, उमर क्या। ठीक, तो अब जो एज है, वट एवर द एज इज, वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, तो जो एज का मतलब ये है कि इस इंडेक्स पे जो एज पड़ी हुई है वो यंग ओल्ड के अंदर पास हो जाएगी, और यंग ओल्ड जो है बेस्ड ऑन दैट एज इट्स गोइंग टू प्रिंट वेदर दिस इज यंग और ओल्ड। ठीक है, अब इफ एवरीथिंग इज फाइन, so this will compile fine, and we will get our the same response again। ठीक है, तो अब देखें इसमें हमने कोड को ज़्यादा साफ सुथरा कर दिया। whatever processing we were doing, we are doing over here, and we are saved। ठीक, अब जो प्रॉब्लम हो सकती है ये हो सकती है कि somebody says कि मैं आउटपुट सेपरेट चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि एक एक इंडिविजुअल वैल्यू पे वो मुझे बताए, बल्कि जब मैं सिर्फ यंग ओल्ड कॉल करूँ मैं सिर्फ सिर्फ तभी मुझे बताए कि कोई स्टूडेंट यंग है कि ओल्ड है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि ये एक आ जाए, तो ऐसे में फिर हम इस तरह काम नहीं कर सकते। we whenever we call young old is going to tell us about all the students when they are young or old। okay, so that is एक म्यूट करना पड़ेगा, कहाँ से होता था participants म्यूट ऑफ, यस, ओके। तो ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है कि here we are just getting the value, and based on the value we are saying if a certain person is young or old। okay, but what can happen, somebody says that I don't want to based on the value, I just only want to call this function when I, and this function tell me about all the students whether they are young or old। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे instead of passing the value we need to pass the entire array। ठीक, तो हमें पूरा एरे पास करना पड़ेगा, which means like this won't work for us, we have to take it out। और जब मैं इसको कॉल करूं, it should only it should tell me all the ages of all the students। ठीक है, तो ये हमें करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि since it should tell me all the ages of all the students, I need to pass the entire array। ठीक है, तो आप इसे पूरा एरे आपको पास करना पड़ेगा। अब ये जो एज है, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, लाइक इफ यू राइट ओनली द नेम ऑफ द एरे यू पास द एंटायर एरे, क्योंकि एरे जो है रेफरेंस पास होता है। ठीक, इसी वजह से सिंस वी आर पासिंग एंटायर एरे वी हैव टू चेंज दिस इनटू एन एरे, we will accept it as an array, so let's call it temp, it's a temporary array। and अब टेम्पररी एरे है, लेकिन उसका मसला क्या है, मसला ये है कि every area हम लिखेंगे, सिर्फ नाम लिखेंगे, तो we are talking about the entire array, the entire array cannot be less than 12, so we have to write something like this 0 1 2 3, but then the problem is that this will only work for one value, it will not work for all values, and for all values you know that since it's an array we need to have a loop over here, so we will write the loop for int I is equal to 0, I is less than temp dot length and I plus plus। ये करने के बाद ये जो कोड है, we'll just put the code inside here, और ये करने के बाद हम इसको अच्छा सा फॉर्मेट कर देते हैं ताकि पढ़ा जा सके। ठीक, और यहाँ पे 0 की जगह हम I कर देंगे। So now we pass an array, and based on the value of the array it's going to
tell us whether the student is young or old. But this will work for all the students. ठीक आप बस सिंपली इसको सिलेक्ट करते हैं और आप टैब दबा देते हैं, फॉर्मेट हो जाता है। और अगर आपने पीछे की तरफ लेके जाना तो शिफ्ट दबा के टैब दबा वापस आ जाता है। तो now we call young old ones, right? And this should make this work. And let's come over here, run this. If everything is fine, it should say young old. ठीक है, तो हमारा जो हम करना चाहते थे वो इसने बिल्कुल सही कर दिया। So we pass an array to young old and it made changes over here. ठीक है, बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि since the array is passed as reference, so this temp is actually the same array as this age. So if you make any changes to temp, the changes will be reflected on age as well. ठीक है, तो ये फर्ज करें कि ये आपका यंग ओल्ड था ना, तो अगर मैं कर दूं कि temp 0 is equal to say 20, तो यहाँ पे temp 0 जो कि इनिशियली आपके पास वैल्यू कम थी, क्या थी मेरे ख्याल में 10 थी, ये 10 थी आपके पास, दैट विल चेंज टू 20। और फिर यहाँ पे आपके पास ओल्ड यंग ओल्ड आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए अगर आप यहाँ पे कोई चेंजेस करते हैं, दिस चेंज आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट over here because arrays are passed as reference। तो यहाँ array is passed as reference का मतलब उसको एक नया नाम देते हैं, चीज वही रहती है। ठीक है, so let's show you like how it will change. So now we compile it again and now we make changes, so it says old young old। ठीक है, क्योंकि आपने जो बेसिक जो आपने वो था उसको आपने चेंज कर दिया। ठीक, और यही चीज बल्कि इसका इसका ज़्यादा अच्छा पता चलेगा कि मैं इस फंक्शन को यहाँ पे तो यहाँ पे हम इनपुट ले लेते हैं। ठीक, और ज़्यादा टाइम ज़्यादा चेंजेस करनी पड़ेंगी। हम यहीं पे कर देते हैं system dot out dot print ln और हम कर देते हैं age 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एज दिखा देगा, पहले सारा डेटा दिखाएगा, एज दिखाएगा। यहाँ पे जब ये फंक्शन कॉल होगा तो एज चेंज हो जाएगी। ठीक है, और फिर वो एज हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो बल्कि यहीं पे कॉल कर देते हैं, कंट्रोल एक्स। तो पहले ये हमें एज दिखाएगा, जो एज है ये फंक्शंस को एज को चेंज कर देगा, फिर हमें नई एज दिखाएगा। ठीक है, तो लेट्स सेव दिस एंड वी रन दिस और ये कर देते हैं। देखिए 10 दिखा रहा है, फंक्शन कॉल होता है उसको ये 20 कर देता है। ठीक है, तो ये फंक्शन के अंदर जो चेंजेस करेंगे तो वो एक्चुअल जो एरे है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा because the array is passed as reference, so whatever changes you make inside the function, those will be reflected on the array in the main function as well। ठीक है, तो अब finally since we do not have that much time left, so I'll just go and quickly tell about classes, so we get that done, and so that if you guys have some problems you can like refer to the classes over there। अब हम क्या करते हैं कि we define a class, we define a student class। The student class is going to have all this data, is going to have all this data, and and yeah, and we are going to use that। So I go to file, I go to new file,
I go to file, save as, let's call it student.java. We save this as Java file, we save, we get the student class, and we write it like this. So we get all this data. So I'll just keep things simpler right now. I'll just write public and public space. So all these variables are now public, and now all of these variables are part of the student. ठीक है, अभी मैं constructor पे नहीं जा रहा. ठीक है, I'm just defining the public variables over here and all this. So this is num. So this can be problematic. ठीक है, हमने किया तो ये है, अब constructor पे जाना ही पड़ेगा. हमने किया है fname, तो देखिए num क्या है. ठीक है, your class acts like a blueprint. Class tells us that that this is we are going to have an array, but num is going to define the length of the array. Okay? And since we don't know the length of the array, a person can define any number of students, so we cannot do something like this. Okay? बल्कि एक मिनट, ये string नहीं होगा ना. देखें, हर जो सॉरी गलती हो गई, हर जो आगे पास class है उसमें that is a student. So when we write string f name, so that is the name of that student. ठीक है, हमें एरे बनाने की जरूरत है. और यहाँ पे एल नेम, तो कंस्ट्रक्टर के बाहर काम हो जाएगा. गुड. और इंट एज, इसी तरह है कि आईबीए के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट का अपना एफ नेम है, एल नेम है, एज है, परसेंटेज है. ठीक है, तो हर स्टूडेंट के जो एट्रीब्यूट्स हैं हमने इस क्लास के अंदर डिफाइन कर दिए. सही है, तो ये तो इसलिए नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल नेम्स, वी आर नॉट अबाउट इंडिविजुअल लास्ट नेम, इंडिविजुअल फर्स्ट नेम, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट इटसेल्फ. ठीक है, हम एक एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं. इसको हम सेव कर लेते हैं. अब बेसिक्स में आके अब चूंकि हमारे पास स्टूडेंट की क्लास आ गई है, तो वी विल राइट स्टूडेंट एंड स्टूडेंट which is equal to new student ठीक. और ये हो गया एक स्टूडेंट को आप इस तरह इनिशियलाइज करते हैं. ठीक, लेकिन वी हैव 3 स्टूडेंट्स, सो वी हैव टू डिक्लेयर an array of 3 students. So student is equal to new student, and over here we make an array. ठीक है, अब ये जो है, ये फॉर्मेट, ये स्टूडेंट का सिर्फ एरे डिफाइन कर रहा है, ये सिर्फ मेमोरी एलोकेट कर रहा है, ये इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को नहीं बना रहा. ठीक है, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है. ये तो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स नहीं बन रहे हैं. तो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स बनाने के लिए यू हैव टू इनिशियलाइज द ईच एंड एवरी इंडेक्स ऑफ दैट स्टूडेंट. So we will have to write the for loop, and we will write student I is equal to new student. ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका एरे बनाया है, लेकिन वी हैवंट एलोकेटेड एनी मेमोरी. हमसे बताया कि एरे होगा, लेकिन वी हैवंट एलोकेटेड एनी मेमोरी. मेमोरी को एलोकेट करने के लिए आपको कंस्ट्रक्टर कॉल करना जरूरी है. ठीक है, तो आप ये करेंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसकी वजह से आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और हर स्टूडेंट का जो वो है वैल्यूज वो असाइन, वो मेमोरी असाइन हो जाएगी. ठीक है, अब चूंकि हम वी आर वर्किंग विद क्लासेस, वी डोंट नीड टू वर्क विद द एरेज. ठीक है, हमें एरेज के अंदर काम करने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब ये है कि एफ नेम इज गोइंग टू बी स्टूडेंट डॉट एफ नेम, एल नेम इज गोइंग टू बी स्टूडेंट डॉट एल नेम. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, लेकिन कौन सा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जीरो डॉट एफ नेम. अगर हम जीरो करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉकिंग, क्या हो गया, if we write zero, so we are talking about one student only, तो उसको सही करने के लिए हम आई कर देंगे. क्या हो रहा है भाई, बंद हो जाओ. आई का एफ नेम, अब ये सही हो गया. ठीक है,
तो इसी तरह स्टूडेंट आई का एल नेम, एज, परसेंटेज, ठीक है, तो ये आई यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दे आर 3 स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स हैव एफ नेम, ऑल द स्टूडेंट्स हैव एल नेम, ऑल द परसेंटेज। तो हम इसके ऊपर काम करेंगे ऑन द ऑब्जेक्ट देमसेल्व्स। वी आर नॉट गोइंग टू वर्क विद we are only going to work with these values through the object. We are not going to work with them directly. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एफ नेम की जगह स्टूडेंट डॉट एफ नेम हो जाएगा, स्टूडेंट डॉट हो जाएगा, स्टूडेंट डॉट, और यहाँ पे ये एफ नेम ये जी क्यों आ रहा है, सिंटेक्स एरर, क्या सिंटेक्स एरर आ रहा है, सर ब्रैकेट लगे। ब्रैकेट होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये हो गया, और अब यहाँ पे यंग ओल्ड, अब यहाँ पे हम एरे पास नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ पासिंग द एरे ऑफ एज, ठीक है, वो हम पास नहीं कर सकते, वी विल पास द एंटायर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये यंग ओल्ड है उसमें हम एरे पास नहीं करेंगे, हम उसमें पूरा पूरा स्टूडेंट पास कर देंगे। तो स्टूडेंट का जो एरे है वो है स्टूडेंट, ठीक है, दिस इज द एरे स्टूडेंट। और यंग ओल्ड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, बिकॉज इट्स एक्सेप्टिंग an array of type student, so we will give it an array of type student। ठीक है, अब ये जो है this is a student, तो जो आप यहाँ पे पास करेंगे, you're passing an entire array which is an array of objects, और यहाँ पे you will get the array of objects। अब जो array of objects है उसके अंदर every individual student has an f name, has an age, तो आगे बात तो सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये temp 0 इज इक्वल टू आप 20 नहीं करेंगे, आप temp 0 डॉट एज इज इक्वल टू 20 आप करेंगे। ठीक है, तो इफ यू वांट टू मेक चेंजेस, ये तो आप ये करेंगे। तो अब नाउ इफ temp I डॉट एज इज लेस देन 12, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट प्रिंटलन, आप लिखेंगे कि the student, और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम उस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जिसकी एज हो रही है, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट आई डॉट एफ नेम प्लस इज यंग। ठीक है, नहीं, क्लासेस यूज करने का फायदा ये है कि हम पहले यंग ओल्ड हम एरे लिख रहे थे ना, तो उसमें हमें सिर्फ उसकी एज मिल रही थी, हमें ये नहीं पता चल रहा था कि उस स्टूडेंट का नाम क्या है। अगर हमें स्टूडेंट का नाम चाहिए होता तो हमें यहाँ पे उसकी यंग ओल्ड में हमें उसका नेम का जो एफ नेम या एल नेम का जो जो वो है एरे, वो हमें पास करना पड़ता। ठीक है, अब हमें तो इसलिए हमें फिर वहाँ पे 2 एरे पास करने पड़ते। अगर मुझे एल नेम ही चाहिए था तो मैं 3 एरे पास करना पड़ते। वो सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो सारी की सारी वैल्यूज जो है वो एक स्टूडेंट के अंदर है। तो अब चूंकि स्टूडेंट के अंदर एफ नेम भी है, स्टूडेंट के अंदर एल नेम भी है, तो मैं उन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव द एंटायर ऑब्जेक्ट ओवर हियर। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर सारी वैल्यूज है। तो आपने लिखा द स्टूडेंट एफ नेम इज यंग। अब फर्स्ट टाइम मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे एल नेम भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्लस करके स्पेस डाल दूँ एक, और फिर प्लस करके मैं देख दूँ कि स्टूडेंट छोटा होगा, स्टूडेंट आई डॉट एल नेम। ठीक है, अब चूंकि मेरे पास पूरा का पूरा स्टूडेंट का एरे आ गया है, तो इस वजह से आई कैन एक्सेस एनी वैल्यू विद इन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं उसको बड़े आराम से एक्सेस कर सकता हूँ।
और मैं उसकी इंडिविजुअल एज को लिया और मैं यहाँ पे आराम से मैं जो अपना जो वो है इंफॉर्मेशन उसको मैं ज़्यादा एलेबरेट कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं इसी तरह लिखूंगा इज ओल्ड। सर जी सर ये स्टूडेंट आई डॉट एफ नेम की जगह टेम्प आई होता है या फिर स्टूडेंट आई भी हो सकता है? 16 लाइन 16। देखिए आपने जो स्टूडेंट पास किया है, ओह सॉरी, हाँ ये स्टूडेंट आई नहीं है, टेम्प है, यू आर राइट। सेम गोज हियर। ये क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि हमने यंग ओल्ड में हमने स्टूडेंट का एरे पास किया था। जो हमने एरे पास किया वो हमने एक और एरे के अंदर एक्सेप्ट किया, लेकिन वो बाय रेफरेंस एक्सेप्ट किया। तो यहाँ भी जो हमने नाम दिया था टेम्प दिया हुआ था। अगर मैं चाहता हूँ ये नाम जो है स्टूडेंट हो तो आई कैन जस्ट मेक इट स्टूडेंट एंड इट विल वर्क फाइन। तो फिर जो मैं पहले कोड लिखा था उसके में बिल्कुल सही काम करेगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे टेम्प लिखा हुआ है तो इट विल वर्क फाइन विद टेम्प, ठीक है, बिकॉज इट इज पास बाय रेफरेंस। ये हो गया। अब इसको हम सेव करते हैं और so the time is almost up, so let's just finish this. कहाँ गलती हो गई? Print ln error cannot find the symbol 43 में है, age 0 43 shift n. You delete this. Again we save this, we come here, we compile, okay, and we run this. ठीक है ना? आप देखें, the student John Rice is young, the student go on is young, the student UGO is old, ठीक है। अब उससे फायदा ये हुआ कि यहाँ पे अगर मुझे ये values, if I were not using classes and I wanted to produce the same output, तो मुझे यहाँ पे नेम का भी एरे पास करना होता, मुझे एज का भी एरे पास करना होता, मुझे लास्ट नेम का भी एरे पास करना होता। तो तीन एरे पास करता, फिर तीनों एरेस को यहाँ पे इस्तेमाल करता। अब वो तीनों एरेस में पास करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव all the data of the student in within this array of students, so all I need to do is pass the array of students। और हर array of student के अंदर उसकी individual values हैं, मैं उनको access कर सकता हूँ as long as those values are public, जो कि इधर public है, मैं public रखी हुई है, तो मैं उनको change कर सकता हूँ, जिसकी वजह से हमारा जो output है वो काफ़ी elaborate हो जाए, ठीक है। Okay, so that was about it for today. I think it was a long lecture and we exceeded the time. So I hope it was informative, and I'll see you in the lab. Well, in fact, in the lab you have to like run the HackerRank thing and try to work with it. And I'll try to fix your errors if you come across them. So let's do it then. So I will be slightly late. I'll be 10 minutes late. So but that shouldn't stop you from going into HackerRank and checking that out. So I'll join you guys in about till 10:10. So till that time, take care, and I hope this you learned something new. If you were having problems, you learned like what you were doing wrong, and if I hope that this was an informative session. So till next time, Allah Hafiz.